Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें सिंक्रोट्रॉन विषय रे पढिबा यार प्रीवियस क्लास रे जो साइक्लोट्रॉन विषय आम पढ़ी से लिमिटेशन देखा जाउथला खास करी जते बेले एक्सेलरेटेड पार्टिकल रो वेलोसिटीटा कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट रहउची सो दैट रिलेटिविस्टिक मास वेरिएशन रहउची ओके सो एई लिमिटेशन साइक्लोट्रॉन रो ओवरकम करबा पई प्रथम आस्तिला सिंक्रो साइक्लोट्रॉन इन द ईयर 1945 by decreasing the oscillator frequency in order to compensate for the changing mass जोटा mass variation अच्छा किंतु एई मशीन रो गोटे मेजर डिसएडवांटेज रहिला जे in case of your electrons they were not able to be detected because of the mass increase with increase in velocity okay so याकू पुणी ओवरकम करबा पई हमकू मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करबा को पड़िला okay thus the cyclic accelerator which uses the increasing magnetic field B in an orbit of constant radius is known as synchrotron आयार बेसिक प्रिंसिपल प्रपोज करा जायथिला इंडिपेंडेंटली प्रथमे बाय व्लादिमीर वेक्सलर जे कि जने रशियन फिजिसिस्ट थिले इन द ईयर 1944 तापरे 1945 रे एडविन मैकमिलन जे कि जने अमेरिकन फिजिसिस्ट थिले ओके सो सिंक्रोट्रॉन जो अछि एक्चुअली एटा दुई प्रकार एक नंबर हला इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन दुई नंबर हला प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन सो प्रथमे इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन सो नारू जणा पड़ुची आमे एठी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करिबा सो एठी आमे ए जो इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी रे एक्सेलरेट करिबा पई यार गोटे प्रिंसिपल अछि in order to accelerate these electrons it uses the increasing magnetic field B for an orbit of constant radius आउ जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अछि तार रेडियो फ्रीक्वेंसी को आमे सिंक्रोनाइज करबा सो दैट रिजोनेंस हबो ओके विथ द इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल को आमे एक्सेलरेट करबा तार भी गोटे फ्रीक्वेंसी अछि सो दुईटा जाको फ्रीक्वेंसी को आमे सिंक्रोनाइज करबा सेही सिंक्रोनाइजेशन रु ही यार नाटा पडिछि सिंक्रोट्रॉन ओके सो यार कंस्ट्रक्शन टा हमें देखिबा सो देखो एटी फिगर रे मु याकू बुझाउची as you can see in this figure it consists of a donut shaped speed vacuum chamber or accelerator एटी donut कहिले तमे जानिछो एटा गोटे केक टाइप रो यार शेप टा ए भली सो इट इज यूज्ड इन अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड आ एठी जो मैग्नेट हमें यूज करछु एक्चुअली इट इज वेरी लाइट इन वेट आर शेपटा इंग्राजी कैपिटल लेटर सी भलिया ओके अच्छा एठी गोटे कॉइल देखो हमें रखीचु जोटा ई मैग्नेट रे गुडे की अछि जोथरे की अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करिवो सो एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें एठी गोटे एडी करंट भी प्रोडक्शन हेबार भी चांस देखिबा को पाउछु सो दैट एटा एनर्जी रो लॉस करेबो सो याकू कम करबा पई कोन करबा हमें भीतर पटु ए वैक्यूम चेंबर को सिल्वर रो कोटिंग दबा okay the inner walls of the vacuum chamber are coated with silver to avoid the energy loss which is caused by the production of eddy current आउ ए जो कोटिंग भितरे गोटे हमें गैप रखिबा ओके तापरे नेक्स्ट फिगर को आसो दिस वन सो एठी देखो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अछि याको हमें यूज करिबा ड्यूरिंग अ प्रॉपर टाइम and on the application of radio frequency across the gaps the electrons will be accelerated every time when they cross the gap okay आ ए गैप को हमें रिजोनेंस कैविटी मध्य कहि थाउ
ओके सो ए फिगर रे आमे देखिया को पाउछु जे स्टील बार अछि इनसाइड द डोनट ओके डोनट भितरे स्टील बार दिस वन ए जो ब्लैक कलर रो दुईटा स्टील बार रखाई जाइछि तापरे ए बार जो अच्छे these are high permeability and they are provided so that the changes in magnetic field takes place only for electron orbit okay अच्छा next ଏବେ यार working को देखिबा okay this one so एठी कहूची आमे इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करिबा वैक्यूम चेंबर भितरे बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन पुणी फिगर को वापस आसीबा देखो এই জায়গায় আমি ইনজেকশন করুছু ইলেকট্রনস র আর এটি ইলেকট্রন র এনার্জি রেঞ্জ করুছি অপ টু 100 কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট ওকে তাপরে ইলেকট্রন গুড়াকু আমি हाई एनर्जी रे एक्सिलरेट करिकी तार वेलोसिटी को इंक्रीज करिबा नियरली क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट ओके सो एठी जो ए दुईटा स्टील बार आमे देखुतिला तार मेजर रोल रहउची केमती ना बिफोर द सैचुरेशन स्टेज ऑफ द बार the changing magnetic field will produce an induced EMF which is in accordance with the Faraday's law of electromagnetic induction किंतु ଯେତେବେଳେ এই ଷ୍ଟିଲ୍ ବାରଟା ସେଚୁରେସନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ମାନେ ସେଚୁରେସନ ମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତ ଆଉ କିଛି ବି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇଏମଏଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବନି ବିକଜ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇଏମଏଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଚେଞ୍ଜ ବା ଭେରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ तो कांस्टेंट जेतेबेले हेगला बा सैचुरेशन हेगला बारटा आउ इंड्यूस्ड ईएमएफ रो प्रोडक्शन हे परिबा नाही सो दिस इज ए स्टेज व्हेन द चैम्बर वर्क्स इन सिंक्रोट्रॉन मेकानिज्म ओके आ मने रखो एठी इलेक्ट्रॉनटा ए कांस्टेंट रेडियस रे ही बुलिबो रिवोल्यूशन करिवो अनलाइक द साइक्लोट्रॉन जोथरे कि आमे देखुतला जे पार्टिकलटा ए बळा गोटे स्पाइरल पाथ रे बुलुथला ओके किंतु सिंक्रोट्रॉन रे रेडियसटा कांस्टेंट रहिबो okay so with the increase in relativistic speed of electron the relativistic mass of electron will also vary okay तेणु करी magnetic field मध्य increase करिवो अच्छा इलेक्ट्रॉन को आमे कोन करिबा फेज रे रखिबा by means of proper adjustment of its frequency electron रो जो frequency तार frequency को आमे मैच करिबा with the RF oscillator frequency केमिति ना रिजोनेटर यूज करिकी ओके अच्छा इलेक्ट्रॉन जेते थर रिवोल्यूशन करूथबो इट विल गेन एनर्जी ओके जेते थर ये रिवोल्यूशन करूथबो इट विल गेन एनर्जी सो दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट तापरे जेतेबेले यार एनर्जीटा मैक्सिमम हे जिवो देन द रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज टर्न्ड ऑफ याको हमें बंद कर दबा ओके तापरे बे कोन हबो ना ए जो इलेक्ट्रॉन्स गुडा हाईली एक्सेलरेटेड हेथिबे आ आमे जानिछु इलेक्ट्रॉन होची चार्ज पार्टिकल सो दैट लार्ज करंट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इट इज सेंट थ्रू ऑक्सिलरी कॉइल्स so that the radius of electron orbit will be changed due to the unstable magnetic flux okay ei accelerated electron को तापरे हमें ei जो टारगेट t देखुछो ता देहरे स्ट्राइक करिबा okay from the inner edge of the donut chamber okay so that highly energetic x-rays ethi dekhucho okay highly energetic x-rays will be released by the target when the accelerated electrons will strike the target okay now from the electron synchrotron the kinetic energy up to 330 MeV can be attained so this is your working of the synchrotron now let us see the theoretical part so देखो एठी जो काइनेटिक एनर्जी होउची इलेक्ट्रॉन रो जदि हमें रिलेटिविस्टिकली देखिबा ताले जदि रेस्ट मास होउची m0 मोमेंटम हेगला p और c जदि वेलोसिटी ऑफ लाइट ताले काइनेटिक एनर्जी e रो वैल्यू हमें जानिछु स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4 आ एठी m0 c स्क्वायर रो वैल्यू 0.51 MeV ओके केमती एटा बाहर करा गला ना m0 होची रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जार वैल्यू हमें जानिछु 9.1 into 10 to the power minus 31 kg आउ c रो वेलोसिटी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट c रो वैल्यू हमें जानिछु 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड
ओके सो ये दुईटा वैल्यू पुट करें यार वैल्यू आसो ताकू पुणी कन्वर्ट कर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके सो यार वैल्यूटा जूल रे आसो पुणी कन्वर्ट कर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ m0c² तापर मोमेंटम जो अच्छी p इट इज इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट सो e बाय c ताले एबे এই মোমেন্টম को ऑल्सो आम जाचु यार वैल्यू क्यू बी आर बाय यूजिंग द लॉरेंज फोर्स कौन जदि मैग्नीट्यूड जदि आम ना एज पर इक्विलिब्रियम कंडीशन इट इज शुड बी इक्वल टू योर सेंट्रीपिटल फोर्स सो दैट बी क्यू भी इज इक्वल टू एम भि स्क्वायर बाय आर ये जो बी क्यू भी केमती आसला आम जाचु लॉरेंज फोर्स रो मैग्नेटिक पार्ट है क्यू इंटू भी क्रॉस बी तार मैग्नीट्यूड नहीं गले यहाँ आसीज तुम बी क्यू भी ओके ये आसला एम भी विच इज नथिंग बट योर मोमेंटम पी विच इज इक्वल टू क्यू बी आर ओके सो एबे ये दुईटा वैल्यू को इक्वेट करदे आम ताले क्यू बी आर रो वैल्यू हो गला ई बाय सी और ई इक्वल टू क्यू बी आर सी दस एठू आम जानुचु जे एनर्जी देख डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी so with the increase in magnetic field B the kinetic energy of the electrons also increases okay आउ जो frequency रोची revolution रो when the electron is moving in the orbit at relativistic speed या को अभी आमे बाहर करि परिबा frequency is nothing but the reciprocal of time period so 1 by t or 1 by 2 pi r by c okay this should be small c okay एटी 2 पाई आर कहीं नेला बिकॉज जो सर्कुलर पाथ रे घुरुची सो थरे रिवोल्यूशन करबा पई जति टाइम नेला दैट इज योर कैपिटल टी एंड दिस पाथ इज नथिंग बट योर सर्कमफरेंस 2 पाई आर आ वेलोसिटी केते ना c तेणु करी 1 बाय 2 पाई आर बाय c और c बाय 2 पाई आर सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर revolution okay a point here to remember that MIT in America has an electron synchrotron which can accelerate the electrons up to 330 MeV and it has a magnet of mass 50 ton okay so ये है फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन एवं सेकेंड टा देखा आम प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन so proton synchrotron होची गोटे particle accelerator which can not only accelerate the protons but it can also accelerate heavy charge particles proton ru भी heavy charge particles positively charged particles like your deuterons then alpha particles ताकू मध्य ये accelerate करि परिबो ओके आउ प्रोटॉन जोटा एक्सेलरेट करूची तार एनर्जी रोची ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 GeV এই प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन को आमे विभाट्रॉन बा कॉस्मोट्रॉन मध्य कहि थाउ let us now see the construction part as you can see in this figure this proton synchrotron consists of a ring shaped magnet okay आ ई magnet रो चारि भाग रहउची it is having 4 quadrants and it is enclosed again in a donut shaped vacuum chamber आ ई vacuum chamber टा स्टील किंबा प्लास्टिक रे तैयारी ओके आउ ए मैग्नीट्यूड रोची ए जो मैग्नेटिक फील्ड रो एटा इंक्रीज करूची विथ दैट ऑफ योर टाइम ओके अच्छा ए जो डोनट चैम्बर को कोन करबा साइड फिगर रे देखो दिस वन इट इज सपोर्टेड इन द गैप ऑफ एनुलर रिंग ओके सो ए रिंग जो अछि मैग्नेटिक रिंग टा तार एनुलर रिंग रो गोटे गैप रे आमे ए डोनट चैम्बर को सपोर्ट करके रखिथिबा ओके so that the magnetic field when it is applied it will be over the 4 quadrants only okay अच्छा तापर कोन करिबा ना यार वर्किंग टा देखिबा कंस्ट्रक्शन देखि सरला परे सो देखो the protons which are coming from Van de Graaff accelerator or any linear accelerator thereafter these protons are accelerated towards the donut chamber okay the particles are then inserted when a small magnetic field is applied initially now a magnetic field को आमे increase करिबा at a proper rate in order to keep the beam of particles in the same orbit मने रखो same orbit माने radius टा constant रहिबो now with this the frequency of the high oscillator is also increased gradually okay the range up to which the protons are to be accelerated is actually much higher than that of the range of electrons
ओके इलेक्ट्रॉन ठारू यार एक्सेलरेशन टा प्रोटॉन रो बेसी रहिबो काहेकि बिकॉज रेडिएशन लॉस जो होउची सेटा प्रोटॉन क्षेत्र रे कम रहउची एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन ओके जेतेबेले मैक्सिमम एनर्जी लेवल को पहुंची जीवो प्रोटॉन रो एनर्जी ताले एबे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हमें डिस्टॉर्टेड कर देबा माने से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को जो बंद कर दिया गला ओके सो दैट एबे एई रेडियस जो ऑर्बिट रे प्रोटॉन टा घुरुथिला सेटा एबे चेंज हो जिवो सो दैट ये आउट ऑफ ट्रैक एबे पळेइ जिवो ओके एई पार्टिकल टा सो दैट एबे एई पार्टिकल टा कोन हबो टारगेट को स्ट्राइक करिवो ओके सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन नाउ लेट अस सी द थ्योरी देखो फ्रीक्वेंसी जो सर्कुलर ऑर्बिट रे एई प्रोटॉन टा बुलुची ताको हमें लिखि परिबा फ्रीक्वेंसी f is equal to the ratio of angular frequency omega to 2 pi okay so omega hela jemti कहली angular frequency of the circular path of proton okay now in terms of charge q and magnetic field b and mass m of the proton पुणी से magnetic Lorentz force को आमे balance करिबा with the necessary centripetal force for continuous movement of proton along the circular path so that mv square by r equal to qvb हबो अच्छा एठू आमे v रो वैल्यू पाइगला qvr by m आमे ई v को लिखि परिबा ओमेगा r because linear velocity v is equal to omega r so एबे एठी देखो r और r कैंसिल हो गला so that ओमेगा रो वैल्यू आसिला qb by m तले ऊपर c स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दबा तले आसिला देखो एबे mc स्क्वायर which is nothing but the energy as per Einstein's mass energy relation okay so qb c square by e हेगला ओमेगा रो वैल्यू okay now the net energy E actually it is the sum of relativistic kinetic energy K and rest mass energy m0 c square of the proton okay so हमें याको लिखि दबा एबे omega equal to qb c square divided by k plus m0 c square okay आ omega को जदि हमें in terms of frequency लिखला 2 pi f so that f रो वैल्यू आसीगला qb c square by 2 pi into k plus m0 c square okay so এই जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी अच्छी के जदि एटार वैल्यू 0 हो गला ताले फ्रीक्वेंसीटा एबे मैक्सिमम हो जाबो बिकॉज एटी 0 हो गले एटी देखो तळे जो क्वांटिटीटा मिनिमम हो जाबो ओके सो दैट न्यूमरेटर बढ़ी जाबो एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम ओके व्हिच इज qbc square by 2 pi m0 c square now when the frequency f of revolution of proton is minimum ताले f minimum is qbc square by k plus m0 c square ओके एटा 2 पाई को हमें एठी उड़े दीचु ओके अच्छा सो एई इक्वेशन जो दुईटा पाइला हमें मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी पई याकू जदी हमें सॉल्व करिबा देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ k व्हिच इज k equal to f max minus f min divided by f max into f min into qbc square by 2 pi now the upper energy limit for the positively charged particle is up to 30 GeV and as per the special theory of relativity आमे जानिछु energy E which is the square root of p square c square plus m0 square c4 so it is also equal to k plus m0 c square okay so एठी आमे एबे कोन करिबा एई जो मोमेंटम अछि p आउ k एटा जदी बहुत बेसी रहुची जेतेबेले वेरी लार्ज हो जाउची मोमेंटम ऑफ k ताले दिस E is equal to the kinetic energy k which is nothing but pc or c into qbr ताले फ्रीक्वेंसी हो गला f equal to omega by 2 pi or c by 2 pi r because omega is velocity per your radius r okay so same result देखो आसिला फ्रीक्वेंसी पई एठी c by 2 pi r एई केस रे भी asuchi in case of proton synchrotron. Finally, a point here to remember that proton synchrotron is used in studies of cosmic rays. तेणु करी आमे याको cosmotron मध्य कहिथाउ. So this device is called cosmotron and the first cosmotron was built in the year 1953 at Brookhaven National Library in USA. Okay, it was the first accelerator to impart kinetic energy in the range of giga electron volt that is GeV to a single particle okay
Thank you.